Hello students, let us start lesson 6 life processes. In this lecture I will teach you about respiration. Respiration has further two subtopics which we will learn one by one. First of all, breathing. Breathing is also known as external respiration. It involves inhalation, intake of O2 and exhalation, release of CO2. It is a physical process. During this process, no energy is released. We will learn it in detail later on. You can see in picture, inhalation, that is intake of O2, exhalation, that is release of CO2. Let us talk about cellular respiration. Cellular respiration means respiration at the level of cells or tissues. Whatever food we intake goes first into alimentary canal. Finally, from alimentary canal it goes into blood, and with the help of blood it goes into each cell and tissues. In each cells or tissues, that food is breakdown either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen or in the deficiency of oxygen. But in all cases, the first step is common, breakdown of food, that is glucose into pyruvate. Let me explain in Hindi. रेस्पिरेशन के दौरान फूड टूटता है और फूड या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा या उसकी एब्सेंस में. Let us talk about breakdown of glucose by these three pathways. In all three pathways, you can see first step is common. First step is breakdown of glucose into pyruvate in the cytoplasm of the cells. Glucose is 6 carbon molecule. Pyruvate is 3 carbon molecule. During this first step, energy is released out. After that, pyruvate is breakdown in three different ways. In case of yeast cell, in the absence of O2, that pyruvate is breakdown into ethanol and carbon dioxide gas. Ethanol is 2 carbon molecule. During this pathway, energy is released. Let us talk about second pathway. In muscle cells, after vigorous exercise, due to the lack of O2, pyruvate is breakdown into lactic acid, which is 3 carbon molecule. During this pathway, energy is released out. Now, third pathway. In our body cells, mitochondria, in the presence of oxygen, CO2 and water is formed. During this pathway also, energy is released. In all three pathways, energy is released. But basic difference is, in first two pathway, there is absence or lack of O2. That's why first two steps are known as anaerobic respiration. In third step, there is presence of O2. So this step is known as aerobic respiration. Let me explain in Hindi. फूड कैसे टूटता है. फूड यहाँ पर ग्लूकोज है जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है. इसका फॉर्मूला है C6H12O2. पहला स्टेप कॉमन है, ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बनाएगा. लेकिन सेकंड स्टेप डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे और टाइप ऑफ सेल्स पर, और यह डिपेंड करता है प्रेजेंस, एब्सेंस और लैक ऑफ O2 पर. इसी बेसिस पर हमने डिस्कस किया एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. लेट अस टॉक अबाउट यूज़ ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हियर. जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है वो एनर्जी ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट. ADP मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ATP means adenosine triphosphate. As you have heard in class 9th, ATP is energy rich molecule or energy currency of the cell. In short, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उससे ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं.
ये ATP मॉलिक्यूल्स कहाँ यूटिलाइज होते हैं? ये यूटिलाइज होते हैं उन प्रोसेसेस में जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, नर्व कंडक्शन में। एक एटीपी के मॉलिक्यूल के टूटने से लगभग 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन को हम और क्या कह सकते हैं, किस नाम से पुकार सकते हैं। इसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुई। इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान फूड ब्रेक डाउन हुआ है। Let us talk about basic difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, it occur in the presence of O2. Anaerobic respiration, it occur in the absence or lack of O2. Aerobic respiration, it occurs in the mitochondria. Anaerobic respiration, it occurs outside the mitochondria, means in the cytoplasm. During aerobic respiration, CO2 is always produced. During anaerobic respiration, depending on yeast cell or muscle cell, CO2 may or may not be produced. During aerobic respiration, more energy is released. During anaerobic respiration, less energy is released. Let us talk about product formation. During aerobic respiration, major product is CO2 and water. But during anaerobic respiration, depending upon yeast cells or muscle cells, the major products may be ethanol or lactic acid. So that was basic difference about aerobic respiration and anaerobic respiration. One more thing you noticed in my notes, that is muscle cramps. मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं? जैसा कि आपने सेकंड पाथवे में देखा कि पायरुवेट ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट से बियॉन्ड एक्सरसाइज करते हैं। वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे मसल सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स वी फील मस्कुलर क्रैम्प. Hope so that concept is clear to you all. Thank you.